Hello friends, this is Dr. Ashish Panchal, professor in Department of Pharmacology. Today we are going to learn the feedback mechanism. As we discussed earlier, the positive feedback mechanism. And in positive feedback mechanism, we discussed the three examples: blood clotting, menstruation cycle and childbirth. Now here we will discuss the negative feedback mechanism. Negative feedback mechanism of action. So in negative feedback mechanism, the example is the blood sugar level. The example is the maintenance of the blood sugar level. So how it will maintain in our body, how the blood sugar level is maintained. So when we eat the food, जब भी हम खाना खाते हैं, so what happen? In food, carbohydrate is there, and this carbohydrate get digested and converted into glucose. This glucose is absorbed into the blood, and the blood sugar level is increased. So after eating, what happen after eating? The blood sugar level is increased. Blood sugar level increase. So after eating, what happened? The blood sugar level is increased. How the blood sugar level is increased after eating? So once we take the food, in food there is a carbohydrate, and this carbohydrate digested and converted into simple sugar, that is glucose. That glucose absorbed into the blood and the blood sugar level is increased. Once the blood sugar level is increased, it activates the beta cell of the pancreas. Activate beta cell of pancreas, and we all know that the beta cell of the pancreas release one peptide hormone, it is insulin, and it release the peptide hormone. It release peptide hormone, and the name of hormone is insulin. This name of the hormone is insulin. Okay, it's a peptide hormone. Now this insulin decrease the blood sugar level by following ways. So it will decrease blood sugar level by 1, with the help of increase the glucose uptake by cell. It will increase the glucose uptake by cell, means increase the glucose utilization. अगर ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन बढ़ गया, what happen? The blood sugar level will be decreased. Second, it increase glycolysis. And what happen in the glycolysis? Glycolysis means breakdown of glucose breakdown of glucose. Okay, अगर glucose breakdown हो गया, then also the blood sugar level will be decreased. The third is increase the third is glycogenesis. Glycogenesis means the glucose to glycogen. Okay, the excess glucose is converted into glycogen and stored in the liver, that is known as the glycogenesis. Glycogenesis means synthesis, so glycogen synthesis. The fourth is
decrease the glycogenolysis. Glycogenolysis means breakdown of glycogen, means glycogen to glucose. So यहां कर क्या है बेटा कि इंक्रीज ग्लाइकोजेनेसिस मींस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा, बट जो एक्सेस ग्लाइकोजन होगा इट विल कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज, उसको कम कर देगा, मींस डिक्रीज कर देगा. एंड द लास्ट इज फिफ्थ, इट डिक्रीज द ग्लूकोनियोजेनेसिस. ग्लूको मींस ग्लूकोज, नियो मतलब समथिंग न्यू, जेनेसिस मतलब सिंथेसिस. तो उसमें क्या होगा बेटा, जो फैटी एसिड एंड जो एमिनो एसिड होगा इट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, वो कम हो जाएगा. सो बाय दिस 5 वे द इंसुलिन डिक्रीज द ब्लड शुगर लेवल. सो आफ्टर दिस ऑल थिंग्स द ब्लड शुगर लेवल इज डिक्रीज. ब्लड शुगर level is decrease. Okay, so फिर से एक बार करते हैं बेटा. After eating the blood sugar level is increased. Once the blood sugar level is increased, the beta cell of the pancreas get activated and it release the insulin. This insulin, it decrease the blood sugar level by this 5 way. It will increase the glucose uptake, increase the glycolysis, increase the glycogenesis and decrease the glycogenolysis and decrease the gluconeogenesis, and this is known as the negative feedback mechanism. अब बेटा इसके साथ ही मैं आपको पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म भी बता सकता हूं. दिस इज ऑल अबाउट द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म. सो यहां पर व्हेन द ब्लड शुगर लेवल इज डिक्रीज, इट विल now release, it activate the alpha cell of pancreas. Once the alpha cell of pancreas get activated, what happen? It release glucagon hormone. Okay, once the alpha cell activated, it release the glucagon hormone, and this glucagon hormone is decrease the increase the blood sugar level. It will increase your blood sugar level. So how it will increase your blood sugar level? So it will increase your blood sugar level by 5 way. Now this both are opposite hormone. Blood sugar level increase, it will decrease. एक बार decrease हो गया, again glucagon will be released and that glucagon is increase your blood sugar level by opposite action. ये यहां पर ये क्या कर रहा है, इंक्रीज द ग्लूकोज अपटेक. सो हियर द फर्स्ट इज डिक्रीज ग्लूकोज अपटेक, ग्लूकोज का अपटेक कम कर देगा. सेकंड, डिक्रीज द ग्लाइकोलाइसिस. देन थर्ड वन इज डिक्रीज द ग्लाइकोजेनेसिस. Fourth one is increase the glycogenolysis, and fifth is increase the gluconeogenesis. So by this 5 way, it will increase the blood sugar level. Once the blood sugar level is increased, once the blood sugar level is increased, this mechanism will start. So by this way our blood sugar level is controlled. By this way our blood sugar level is controlled. So now here
यहां से बेटा मैंने 2 पार्ट कर दिए, राइट, और यहां मैं ग्रीन पेन से लिखता हूं, दिस इज द पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म एंड दिस इज द नेगेटिव मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मतलब बेटा अगर आपको नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म बोले तो आपको ये पार्ट लिखना है, और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म बोले तो आपको ये पार्ट लिखना है। यानी आगे हमने पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म अलग से 3 तो पढ़े, बट यहां पर मैंने दोनों दिखा दिए आपको, पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ऐसा ही एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं ब्लड प्रेशर का, रेनिन रिलीज। ओके, सो नाउ द सेकंड वन इज blood pressure. So now the second example is blood pressure. So when your blood pressure is decreased, when your blood pressure is decreased, blood pressure is decreased, decrease मतलब कम हो जाना। When your blood pressure is decreased, what happened? The juxtaglomerular cell of the kidney release the renin. Okay, the juxtaglomerular cell of kidney release renin. So what happened? This juxtaglomerular cell release the renin. Once the renin is released, once the renin is released, this renin convert angiotensinogen to angiotensin 1. So now here the angiotensinogen, and from where this angiotensinogen is released, it is released from the liver. This angiotensinogen convert into angiotensin 1 with the help of what? With the help of renin. So this renin convert angiotensinogen to angiotensin 1. Now this angiotensin 1 convert into angiotensin 2 with the help of one enzyme ACE. The full form is angiotensin converting enzyme. क्या है बेटा इसका फुल नेम? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम. दिस एंजियोटेंसिन 2 increase blood pressure by, it will increase your blood pressure, it increase the blood pressure, means once the blood pressure is decreased, juxtaglomerular cell of the kidney is release the renin. This renin act on the angiotensinogen. This angiotensinogen is secreted from the liver. It will convert into angiotensin 1. This angiotensin 1 convert into the angiotensin 2 and with the help of enzyme, angiotensin converting enzyme. This angiotensin converting enzyme is secreted from the lungs and it convert into angiotensin 2. This angiotensin 2 increase the blood pressure by 1. Release aldosterone. Aldosterone is ADH. तो वो क्या करेगा बेटा? ADH एंटी डायरेटिक हार्मोन, मीन्स वो यूरिन आउटपुट कम कर देगा, और जैसे ही यूरिन आउटपुट कम होगा द ब्लड वॉल्यूम इज इंक्रीज. सो ये क्या करेगा? ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज कर देगा, और ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा द ब्लड प्रेशर विल बी इंक्रीज. इट कॉज द वाजो कंस्ट्रिक्शन एंड ड्यू टू वाजो कंस्ट्रिक्शन द ब्लड प्रेशर इज इंक्रीज. सो हाउ द ब्लड प्रेशर इज इंक्रीज? रिलीज द aldosterone and cause the vasoconstriction and it increase the blood
pressure. Clear? So now once the blood pressure is increased, what happen? Decrease the release of renin. Okay, so यहां पर क्या होता बेटा? Renin release is increase. Okay, and due to renin release is increase, this mechanism is carry forward or further going on, and it increase the blood pressure. जैसे ही blood pressure बढ़ गया, the renin release will be decreased. So this is known as the negative feedback mechanism. renin release कम हो गया. अब अगर बेटा सोचो कि ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, सो व्हाट हैपन? अगर ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तो क्या होगा? व्हेन द ब्लड प्रेशर इज डिक्रीज, सेकेंड पाथवे में जा रहा हूं, ओके, द हार्ट वॉल particularly atrium release arterial natriuretic factor ANF. इसका फुल फॉर्म मैं यहां लिख रहा हूं ANF, arterial natriuretic factor, and this arterial natriuretic factor cause the vasodilation. It cause the vasodilation. So अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, सो हार्ट वॉल में से ANF रिलीज हो रहा है. ANF मीन्स आर्टेरियल नाइट्रियोटिक फैक्टर, और वो क्या कर रहा है? वासोडाइलेशन. जब वासोडाइलेशन होगा, व्हाट हैपन? द ब्लड प्रेशर इज डिक्रीज, और वापस ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा. सो व्हाट हैपन? द रेनिन इज रिलीज. तो दैट इज पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म. यानी बाय दिस वे द blood pressure get regulated. By this way the blood pressure get regulated. So this is the mechanism of the blood sugar regulation, and this is the mechanism of the blood pressure regulation. Okay, so here in this topic we will discuss the negative feedback mechanism.